Good evening, my friends. Good evening, sir. Good evening, Good sir. evening, Good sir. evening. Good evening, sir. Uh, Dr. Aftab, are you ready? Yes, sir, I have joined. Yes, sir. Should we start? Yes, sir. Sure. Right. So, my friends, it's my pleasure to introduce one of my young and worthy colleague in the Department of Education, Dr. Aftab Ahmad Ansari, Associate Professor, and inclusive education basically is his area of specialization. So, a student of geography, did MA in Geography from Aligarh Muslim University, then came to the Department of Education, from where he did B.Ed, M.Ed, qualified NET and JRF, and then did PhD from the department. Then joined one central university, Maulana Azad National Urdu University, and served over there for almost 12 years. And then after serving 12 years there, he joined the Department of Education as an associate professor in 2021. So, as I mentioned, his special area is inclusive education. There is much talk on inclusion nowadays. And if you see NEP 2020, it talks much on inclusion and inclusive education. So, the moment we kept this topic in our workshop, we thought that no one will be as suitable as Dr. Aftab Ahmad Ansari. So, besides his academic credentials, you see, he has contributed a lot in various seminars, presented various papers in national and international seminars, and of course has guided so many students in writing their MA dissertation. And besides, he has traveled a lot throughout the length and breadth of the country to deliver the lectures. And he has been a key member of my team. In fact, whenever I organize any program, I give the opportunity to Dr. Aftab to do the needful. So, his complete CV is available on the web page of the department. If you want to know something more about him, definitely you can know that. At this juncture of time, I think since we are running short of time, so with this short introduction, I'm handing over the session to Dr. Aftab. And Dr. Aftab, one thing, in fact, my participants are very interactive. They really want to learn, and every resource person has enjoyed their company. So I'm quite sure you will also enjoy their company. Dr. Sure. Aftab, it's over to you. Thank you, sir. Thank you, Sai, sir. Uh, Very good afternoon to all of you, my dear friends. Even this is the evening. So I should say very good evening to all of you. This 10th online Malvi Mission Teachers Training Program under the NEP Orientation and Sensitization Scheme. The topic which is given to me is really, I will say that the need of hour. And I would like to congratulate to the director of this institute, that is HRDC, AMU Aligarh, Aligarh Muslim University, Aligarh, Dr. Faida ma'am, for selecting this topic and giving me chance to discuss with you. And I would also like to thanks to coordinator of this program, Professor Sajid Jamal Saab, for giving me the chance to speak over it. Dear participants, basically the inclusive education, and especially for the inclusion of differently abled person, is basically in a progress, I will say a progressive manner. So if you see, I will start with one quote by Levin 2000, that ignorance is a guarantee of marginalization. 1 billion people, or 15% of the world population, experience some form of disability, and disability prevalence in higher. More or less, this data shows nearly 2/3 of individuals with disability live in the developing countries and sustain themselves with the less than $1 per day. This is what the scenario. Next, I will show the person with disability are more likely to experience adverse socioeconomic outcomes such as less education, poor health outcomes, lower level of employment, and higher poverty rates. This is the scenario. And COVID-19, of course, we all face this situation about 2 and 3 years. COVID-19 continues to have a wide-reaching impact across the globe. It is important to note how persons with disabilities are impacted by the pandemic
including health, education, and transport consideration. Even we, the normal people, have come under this COVID-19 with a very poor and I will say the a very pathetic condition. So what to talk about those people who are having one or other type of disability? 98% of all students with disability lack access to primary education. Yani only 2% disabled population of children have access to the education, while 98% of the total disabled children have lack to access to the primary education. They are socially, economically, physically excluded and marginalized from mainstream of society. Studies conducted by the LAG in 2007, they reported this. People with disabilities face barrier in accessing service like health, education, employment, and transport, among others. Dear participants, people with disability are more likely to be unemployed than non-disabled people. So you can imagine if the normal people are so much unemployed, then what to think about these people who are having a disability. In Organization of Economic Cooperation and Development countries, the employment rate of people with disabilities is about 44%. This what I discussed with you were the global scenario about the disability and their employment, their education, their literacy, and their primary education. Let's see the Indian scenario. India needs growth, but more importantly, it needs inclusive growth. This is the mission and vision of our present government, that we should develop our education system, we should develop our nation through inclusive growth. No Indian should be left behind. This means education for all and higher education, research and innovation that creates products and services which are affordable. Further, you will see, this is the World Bank report. India has the second largest education system in the world, with 200 million children aged between 6 to 14, around 25 million of whom are out of school. Similarly, Singer 2005 studied that, however, bearing in mind that apparently only 35% of children are registered at birth, UNICEF 2004, others estimate between 35 to 80 million out of school children. This is the data, this is the information which I have collected. Though, according to the census 2011 finding of a 2.2% disabled population, that is 2 crore 19 lakh 6,769 in number, are challenged by NGOs in the field who believe that figure to be closer to 6%. What I mean to say here, that what the census 2011 says, that India is having only 2.2% population from the disabled people. But one of the NGO challenged that no, this population, that is 2%, is very less. They have surveyed and find out that this population is about 6% or 70 million. That is Thomas 2005 and Thomas 2005B quoted the same data of the NGO. So this is the another aspect that we bother about this data, that is 6% or 2%. The matter being an academician, we have to consider how to make them able and how to bring them in mainstream. If we see the types of disability, it has been categorized in Indian context, that is 5 types. The first one is sight. It means that one who are unable to see, that is visually challenged. The second one is speech, or unable to speak properly or unable to communicate, that is dumb. And the third one is the one who is having hearing impairment, that is deaf, and locomotor, orthopedically challenged. And the last, that is fifth one, mental retardation, which excludes disability from such as autism. These are the 5 categories, and these 5 categories, in addition, a person has to be medically certified as having 40% one of these disabilities. What I discussed, the 5 categories. इनमें से किसी में भी अगर कोई बच्चा या कोई चिल्ड्रन या कोई व्यक्ति 40% या उससे ज्यादा डिसेबल्ड है,
तो उसको अकॉर्डिंग टू द नेशनल सैंपल सर्वे 2000 उसको हम क्या कहते हैं बेंचमार्क डिसेबिलिटी मानते हैं, और वो डिसेबिलिटी जो होती है वो डिफरेंट जो प्रोविजंस हैं उसके लिए वो एंटाइटल होता है उसके बेनिफिट्स को पाने के लिए। According to National Sample Survey 2002, only 45% of the disabled population is literate and 9% has secondary level education or higher. Among children aged 0 to 19 years, 1.7% have a disability, and furthermore, boys 1.81%, then girls 1.5% in India, meaning that again there is the disability across the age group, what we have seen. This is the total population between the age of 5 to 19 with different disabilities, which you will see that out of this total population, that is 17.24% is a population share consists that is in seeing, that is visually challenged. 19.46% in hearing who are hearing impaired, 9.91% who are having the deaf people who are dumb people who cannot speak properly, and 14.12% that is locomotor who have no proper movement having the some orthopedic problem, and 8.30% that is mental illness, and now 1.9%, 94% and 1.989% mental retardation and any other disability respectively, and 9.13% people are having multiple disabilities, means they are having two or more than two type of disability. This is the data in this distribution. What I discussed with you that according to census 2011, 29% population resides in urban areas, and 71% population resides in a rural area. Again, there is the great difference between these two. You can say the difference between the rural and urban, and you will see that the population is about more than 2 times in rural areas as far as disability is concerned, disabled population is concerned, and only 29% resides in urban areas. And you imagine the scenario of Indian village, how much they are advanced and how much they are having the disabled friendly situations and disabled friendly conditions. So again, the population is more in rural areas than the urban areas. So they are in more challenging situations in rural areas. Now the distribution of differently abled population in India according to the census 2011 in various states and union territories. If you will see at all India level, disabled persons constitute what I told you already, that is 2.2%. In 15 states and union territories, the prevalence of disability, that means proportion of disabled person to the total population, is higher than the all India level, meaning thereby 15 states and union territories are having more than 2.21% population, that is average disabled population of India. Among the states and union territories, Sikkim has the highest prevalence of disability, that is 2.98% of the total population of Sikkim. Similarly, Daman and Diu, that is 0.9%, reported the lowest prevalence of disability. Dear participant, this is the I can say the state-wise and the union territory-wise distribution, the highest and the lowest. The highest number of disabled persons is from the state of Uttar Pradesh. Nearly 50% of the disabled persons belong to the one of the 5 states. That is these 5 states constitutes about 50% of the total population, disabled population of India. Uttar Pradesh consists 15.5%, Maharashtra 11.5%, Bihar 8.69%, Andhra Pradesh 8.45%, and West Bengal 7.52%. These are the 5 premier states of having the maximum number of disabled population. These are the data of the all India level, Bihar, Meghalaya, Kerala, state of Uttar Pradesh. Now you will see that India is one of the few countries of the world over where the education of children with special needs does not fall within the purview of Human Resource Development Ministry, that is MHRD.
Can you imagine that even the Ministry of Education or Ministry of HRD, earlier known as the HRD Ministry, is not considering these people as a human resource, even though they are very much differently abled. Of course, they cannot do one thing, but they can do so many things. So even today, the Ministry of HRD is not going to recognize them as a human resource, though they constitute more than 2% population, which is, I think, more than one of the minority community of India. The prime focus of which is rehabilitation, not education. What basically the various policies and programs of the government is trying to focus on their rehabilitation, how to rehabilitate them, कैसे उनको हम इसी जगह पे शांतिपूर्वक और सुकून से उनको छोड़ दें, रख दें, ताकि हमारे ऊपर कोई visible burden ना हो. They cannot question us. They are not talking about their education. They are not talking about their mainstreaming. India estimated 40 million children in the age group of 4 to 6 years with physical and mental disabilities are being excluded from the mainstream education. They are not given chance in the mainstream. They are not given, I will say, the admission and enrollment in the mainstream schools and education systems. According to census, मैंने पहले इसको कोट कर दिया है, मैं दोबारा इसको मैं रिपीट नहीं करना चाहता हूँ. An estimate shows that 8 million children out of school India, ये MHRD की रिपोर्ट है, 2009 की स्टैटिस्टिक, many of whom are marginalized by the dimensions such as poverty, gender, disability and caste. अगर इन सबको अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि ये MHRD की रिपोर्ट है 2009 की, फिर इसमें 8 मिलियन चिल्ड्रन जो हैं वो मार्जिनलाइज्ड है. अहमद हंसन ने एक बड़ी अच्छी बात कही है जो मुझे लगा कि यहाँ पे कोट करना चाहिए, एंड दैट शुड बी पुट बिफोर यू. बीइंग डिसेबल्ड शुड नॉट मीन being disqualified from having access to every aspect of life. अगर किसी के अंदर किसी वजह से नेचुरली और आफ्टर सम टाइम अगर कोई डिसेबिलिटी आती है आफ्टर बर्थ, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो बंदा या वो पर्सन या वो बच्चा जो है वो डिस्क्वालीफाई हो जाए. डिसेबल्ड हो सकता है बट इज नॉट नेसेसरी डिस्क्वालीफाइड. तो एंड वो किसी अपनी जिंदगी के किसी एस्पेक्ट में एक्सेस ना कर सके. So keeping these points and these data and aspects in mind, there are three questions come in our mind. That what are the needs and challenges for equity and inclusion of these differently abled persons? क्या जरूरत है, क्या इनकी needs है? Being a teacher, at least we must know what are their needs: academic needs, social needs, economic needs. How will an inclusive environment meet the needs of differently abled person? So of course, again, the questions come towards us that how we can create the inclusive environment. And the third question is how quality education can be effectively and efficiently deliver for differently abled person. किस तरह से उनको हम effectively और efficiently quality education provide कर सकते हैं, because these three questions will pave the way to bring them into the mainstream. So my dear participants, this can be only possible through inclusive process or inclusive education, but this can be understood through the historical process. ये एक दो दिन की बात नहीं है कि हम inclusive तक आ गए हैं. It took the many eras, hundreds of years कि हम आज inclusion की तरफ आ गए हैं. And for this purpose, to knowing and to making us aware this historical process, I have divided this historical process of inclusion in 7 eras. That is the first era, the era of exclusion. When the society began from the ancient time, basically these peoples are not accepted by the human society. They were not given any due respect as a human being. They are estimated or abandonment. अगर कहीं किसी के वहाँ कोई इस तरह का बच्चा पैदा भी हो जाता था, तो they feel that this is curse on our family, this is curse on our society, this is curse on our village. So they are treated initially in such a way. या तो उनको मार देते थे फौरन, या उसको एक्सटिमेट कर देते थे, या उनको खत्म कर देते थे, या आउटकास्ट कर दिया जाता था. This was the situation of these kind of disabled persons. Gradually we started accepting them, and that is known as era of acceptance.
as a subject of amusement and use. Let's see how we have started accepting them. We have started accepting them as a amusement, एक तफरी की तरह, एक खिलौने की तरह, या किसी यूज के लिए, किसी इस्तेमाल के लिए, जैसे कि कोई एक्सपेरिमेंट करना हुआ, कोई टेस्ट करना हुआ, लाइक दैट. या फिर हमने उनको, जैसे कि हम अपने घरों में पेट एनिमल्स रखते हैं और हम उसे किसी कॉर्नर पर रख देते हैं और हमारे घरों में लोग आते हैं और उसको एंजॉय करते हैं, लाइक ए स्टेटस सिंबल कि हाँ भाई इनके घर में एक ऐसा इंसान की शक्ल का आदमी है जिसके एक हाथ नहीं है, या उसके दोनों आंख नहीं है, या उसके पैर टेढ़े हैं या पतले दुबले हैं, लाइक दैट, वट एवर द सिचुएशंस वेयर दैट टाइम, बट दे वेयर कंसीडर्ड लाइक दैट. अगर हम लोगों ने एक्सेप्ट किया था तो द एरा ऑफ एक्सेप्टेंस में ये सिचुएशन हुआ करती थी. द सेकंड वन इज, सॉरी, द थर्ड वन इज द एरा ऑफ प्रोहिबिशन. लीगली हमने उन्हें आउटकास्ट किया. पोप्स एंड चर्चेस ने ये कानून बना दिया कि दे आर नॉट, दे कैन नॉट लीव इन द मेन स्ट्रीम ऑफ सोसाइटी. और दूसरी ओर ये हमने क्या किया, हमने कह दिया कि दे आर विच क्राफ्ट. ये क्या है, ये दे आर द लाइक ब्लैक म्यूजिक, ब्लैक मैजिक, यानी काला जादू है उनके ऊपर हुआ है. दैट्स व्हाई दे आर लाइक दैट. तो इसलिए उनको हमने प्रोहिबिट कर दिया मेन स्ट्रीम ऑफ सोसाइटी से. और दिस वाज द, और ये काफी दिनों तक चला. ऐसा नहीं कि मैंने आपको एक लाइन में बता दिया तो ये कुछ दिनों की बात रहेगी. हो सकता है कुछ एरा जो है वो सालों साल चलते रहे, फिर जाकर सोसाइटी में कहीं से कोई अवेयरनेस आई, कोई सोशल रिफॉर्मर आया, उसने उसके बारे में बात किया तो कुछ थोड़ा सा उनको और वेटेज मिल गया. एंड देन इन द एरा ऑफ सिंपैथी एंड असाइलम हमने क्या किया कि हमने उनके ऊपर थोड़ी सी सिंपैथी दिखाई, इसलिए कि शायद हम ऐसा करेंगे तो हमें पुण्य मिल जाएगा, हमें थोड़ा सा पुण्य मिल जाएगा, हम स्वर्ग में जाएंगे, हमें ज्यादा पॉइंट ज्यादा हो जाएंगे. इसलिए हमने उनको सिंपेटाइज करना शुरू किया. और उस सिंपेटाइज करने में हमने उनके लिए कुछ अनाथालय बना दिए और सेपरेटली उन्हें वहां पे हमने इस्टेब्लिश कर दिया या रिहैबिलिटेट कर दिया. एंड दैट इज नोन एज एरा ऑफ असाइलम, सिंपैथी और इंस्टीट्यूशनलाइजेशन. Gradually, when we started, our society gradually grows up and developed the society, and people became aware about these people, and that era is known as era of isolating setting. Era of isolated setting means we have started educating them for their own activities. हमने उनको क्या किया, कुछ ऐसी जगह पे रखा, कुछ ऐसे स्कूल्स खोल दिए जहाँ की उन्हें बेसिक चीजें सिखाई जा सके कि कैसे उनको नहाना है, कैसे उनको अपने दिनचर्या के या डेली वर्क करने हैं, डेली के काम करने हैं, या क्या उनको कपड़े कैसे पहनने हैं और खाना कैसे खाना है, खुद अपने काम वो करने लगे. इस तरह से और उस तरह से उनको हम पढ़ाने की बात करने लगे. लेकिन दैट वाज ओनली लिमिटेड फॉर देयर ओन एक्टिविटीज, नॉट इवन वी डोंट टॉक अबाउट देयर मेन स्ट्रीम. हम तभी उनसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि दे कैन कंट्रीब्यूट इन आवर सोसाइटी. फिर धीरे धीरे सोसाइटी डेवलप करती रही जब, तो एरा ऑफ सेग्रीगेशन सेटिंग आया. फिर हमने क्या किया, स्पेशल क्लास सेट किया. हमने क्या क्लास सेट किया भाई, कि हर स्कूल में एक सेपरेट सेक्शन होगा और जिस सेक्शन में इस तरह के बच्चे, जैसे आप लोगों ने, अगर आप लोगों के एज के, आप लोग अपने वक्त को याद करें तो याद कर सकते हैं कि भाई हर क्लास में ए सेक्शन होता था, बी सेक्शन होता था, सी सेक्शन होते थे. और नॉर्मली जहां तक मुझे याद है कि ए सेक्शन में अच्छे स्टूडेंट्स रखे जाते थे, बी सेक्शन में उससे थोड़ा सा लो ग्रेड के, लोअर अचीवमेंट वाले बच्चे रखे जाते थे, और सी डी में इसी तरह के बच्चों की ग्रुपिंग हुआ करती थी. समटाइम्स मे बी वाइस वर्सा आल्सो. ये एक नोमेनक्लेचर है. तो इस तरह की हमने स्पेशल क्लासेस की सेटिंग किया कि भाई चलिए हम इनको स्कूल में तो पढ़ा देंगे, नॉर्मल स्कूल में पढ़ाएंगे, बट दे कैन नॉट सिट विद द नॉर्मल चिल्ड्रन. They will be given a separate section of their class, and through this way, that is the segregated setting. That is not included setting. हम उसको इंक्लूसिव नहीं मान सकते हैं कि हमने स्कूल में जगह दे दिया और हम कह दिए कि हाँ भाई हम इनको पढ़ा रहे हैं और साथ तो रखे हुए हैं और साथ पढ़ा रहे हैं. Because we are teaching them, we are making them to learn in a separate section. But now today in modern era, somehow we are trying to come and we are trying to bring them in the mainstream, and that era is known as era of inclusive setting, in which the regular classes, we have allowed them to sit in the regular classes with the normal children. That is known as inclusion or inclusive education.
Inclusion basically describes much more than the acceptance. Again, there is one more aspect which must be clear here. That is the सिर्फ उनको accept कर लेना, उनको क्लास में बैठा देना is not inclusion. Children with disability in the mainstream. Inclusiveness do not focus on the accommodation. सिर्फ बैठा दिया हमने और खामोशी से बच्चे बेचारे बैठे हैं और हम पढ़ा रहे हैं. That's all. That is not the inclusion of these children into the general education setting, but are focused on the restructuring of the school, colleges, universities to accept and provide for needs of all students. Meaning thereby, we have to restructure our curriculum, we have to restructure our syllabi, we have to restructure our system of education, we have to restructure our physical infrastructure. If we are able to do so, then it means that we are trying to educate them. We are trying to bring in the mainstream of society. It means that then we are going to fulfill the dream of the philosophy of inclusion. The inclusive program, specialized instruction and support are provided to any student who is in need of support without labeling him or her disabled. अगर हम उन्हें बिना किसी उनकी disability के लेवल की अगर हम उन्हें educate कर रहे हैं, then this will be the inclusion. In other words, no discrimination is made among the able and disabled. There must not be any discrimination. There must not be any differentiation. Then all children in the sets of their disability are welcome by making the same school and same class along with their non-disability. Meaning thereby, if we are ready wholeheartedly to welcome all type of children in the same classroom, then that will fulfill the dream of inclusive education. These are the some points which I would like to highlight here about the integrated approach and inclusive approach of education and teaching. That is education for some. अगर हम कुछ बच्चों को पढ़ा रहे हैं किसी एक जगह segregate करके having a similar type of disability, it means that we are teaching. Our approach is integrated approach. But if we are educating for all, educating of all children having any kind of disability irrespective of their disability, that is inclusive approach. If the education is static, concentrated for a special kind of a student, that is integrated approach. If our education is flexible, we are including all the children, we are asking question to all the children, that is flexible. Collective teaching, हम किसी एक जगह इकट्ठा किए किसी रिमोट एरिया में चले गए, उनकी अपनी लोकेलिटी में जाके हम पढ़ा गए, तो वो फिर कहलाएगा collective teaching, that is integrated approach. But individualized teaching, meaning thereby we are concentrating each and every individuals according to their needs in the same classroom, that is inclusive approach. Learning in isolated areas, learning in integrated areas. This is the difference between the integrated approach and inclusive approach. Diagnostic perspective and holistic perspective. This is the difference between these two. If we diagnose what kind of disability you have, you go in that room. What kind of disability you have, you are blind or visually challenged, you go in different section. If this is the integrated approach. But if we allow them holistically to sit in the same classroom, that is the inclusive approach. Opportunity is limited by exclusion. जाहिर सी बात है, when we teach them according to their disability, तो opportunity उनकी limited हो जाएगी. But if we provide them inclusive approach, that is equality of opportunity for all. हर बच्चे को हम बराबर कर समझ रहे हैं क्लासरूम में, irrespective of their ability and disability, that will be inclusive approach. Disability view, अगर हमने उनके disability के according हम उसको वो करते हैं, हमें करिकुलर को व्यू करना है, यानी करिकुलर को हमें व्यू रिव्यू और रिस्ट्रक्चर करना है, न कि उनके डिसेबिलिटी को. Labeling children disability wise, oppose all kind of labeling. If we are labeling the children according to their disability, that is integrated approach. And if we are opposing all kind of disability or all kind of labeling, that is inclusive approach. These are the some points which can create differentiation between the integrated approach and inclusive approach. What are the biggest barriers that we must know to inclusion for differently abled person or disabled person? Dear participant, these barriers are so many barriers which we will discuss, but I will try to know what are the real barriers of those
students who are having one or other type of disability. And traditionally, I used to invite some of the disabled persons, disabled students, to know their own views and put before you what are their own challenges, and especially in academics, उनके अपने पढ़ने पढ़ाने में, स्कूल कॉलेज जाने में कौन कौन से challenges आते हैं. मुझे लगता है कि अगर उनसे हम पूछ के जानने की कोशिश करें तो that will be more effective. And for this purpose, I have invited 3 students, one Mr. Mohsin Ibrahim Mir, Ms. Sazia Parveen, and Imran Nabi Bhatt. They all are the different courses, student of different courses. इसमें इब्राहिम मीर जो हैं वो ऑर्थोपेडिक चैलेंज स्टूडेंट हैं, एमएटी स्टूडेंट है वो, और इनके दोनों हाथ और एक पैर प्रॉपरली काम नहीं करता है. एंड आई थिंक ही वांट्स टू बी जॉइन दिस प्रोग्राम. इब्राहिम? Yes, sir. Okay. Thank you, Ibrahim, for joining this program. Here are the so many participants, and they are basically our respected teachers. So you are orthopedically challenged, as I know you very well. So it will be better that you share your own experiences about your teaching learning process, how you are learning and how you came to this course MA education from your primary education with your this disability and other your this differently ability personality. What challenges you face and what do you expect from our teacher? Ibrahim Mir. Yes, sir. Thank you, sir, for giving me this opportunity to share my views about my life, how मैंने कैसे स्टार्ट की जिंदगी और कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई. तो थैंक यू सर. मेरा नाम मोहसिन इब्राहिम मीर है. मैं श्रीनगर, JNK श्रीनगर से मैं रहता हूँ. और मैं जो पैदा हुआ था तो एक नॉर्मल बच्चा पैदा हुआ था, एक हेल्दी. बट आफ्टर सम टाइम 5 साल के बाद मेरी जो प्रॉब्लम हो गई है, मेरा जो लेफ्ट साइड है जो है वो काम करना बंद किया, क्योंकि कुछ थोड़ी प्रॉब्लम घर में हो गई, जिसकी वजह से मेरा ये बेकारी हो गया लेफ्ट साइड, और मैं चल भी नहीं पाता था. तो फिर पापा को लगा शायद ये बचेगा भी नहीं, तो फिर पापा ने मुझे डॉक्टर के पास तो ले गए, लेकिन बहुत कोशिश के बाद मैं ऐसा ही रहा. डॉक्टर्स ने कहा कि ये ठीक हो सकते हैं अगर इनकी एज थोड़ी थोड़ी बढ़ जाएगी, लेकिन थोड़ी थोड़ी इम्प्रूवमेंट आ रही थी, लेकिन इतनी भी नहीं कि मैं अच्छे से चल पाता. मेरे पापा का एक सपना था, एक ख्वाब था उनका कि वो अपने बच्चों को एक अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहते, प्राइवेट स्कूल में. वो स्कूल प्राइवेट तो था, लेकिन वो मेरे सिबलिंग्स के लिए ठीक रहा, लेकिन मेरे लिए वो बहुत बुरा रहा, क्योंकि टीचर्स मेरे साथ इतने अच्छे से ट्रीट नहीं करते थे, मुझे अच्छे से पढ़ाते भी नहीं थे, और जिसकी वजह से मेरी स्टडी बहुत बेकार रही. मेरे पास तो शेयर करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन टाइम इतना नहीं है कि मैं अपना पूरी जिंदगी शेयर कर सकूं आज. तो जहाँ मेरी 1st से 8th तक वहाँ स्टडी हो गई, लेकिन मैं अच्छे से ना पढ़ पाता था, ना मुझे टीचर से इंटरेक्ट अच्छा था, क्योंकि टीचर्स मुझे अच्छे से, क्योंकि वहाँ पे टीचर चेंज होते थे, तो मुझे मेरे साथ अच्छे से बिहेव भी नहीं करते थे, जिसकी वजह से मैं अच्छे से पढ़ भी नहीं पाता था, और मेरी स्टडी डल थी. मुझे घर वाले भी बोलते थे तुम पढ़ते क्यों नहीं, वो ये, लेकिन कोई मेन प्रॉब्लम पे नहीं जाता था. हमसे पूछे क्या है क्यों नहीं है, हमें अच्छे से बात करे, कोई नहीं करता था. लेकिन फिर 8th के बाद मैं दूसरे स्कूल में चला गया, तो वहाँ पर टीचर्स तो अच्छे थे, लेकिन मेरा ये था कि मैं टीचर्स से बात ही नहीं करना चाहता था, क्योंकि मैं दूसरे स्कूल तो गया था, वो गवर्नमेंट स्कूल तो था, लेकिन टीचर्स और हाई क्वालिफाइड, तो वो मुझे अच्छे से बात करते, मुझे अपने पास बिठाते थे, लेकिन मैं दूर जाता था, जिसकी वजह से मैं 10th में फेल हुआ, क्योंकि बोर्ड एग्जाम था, तो वहां से मैं फुली फेल हो गया. जब फेल हुआ तो मुझे मेरा मजाक बनाने लगा घर वाले, मेरे कजन्स मजाक बनाने लगे, तुम फेल हो, पास नहीं हो जाओगे कभी. वो मुझे इवन रॉबर्ट टैगोर कहते थे, वो 4 साल 5 साल के बाद उसने 10th पास किया, तुम ऐसे करोगे वैसे करो, कभी नहीं पास होगे. तो ये ताने ताने खा खा कर मैं परेशान हो गया था, और मुझे थोड़ी बहुत स्टडी से दूर भी हो गया था, तो मैं अब पढ़ना भी चाहता था. तो फिर जब मैं 10th में वो बुक्स मैंने क्वालिफाई की, क्योंकि जब मैं 10th में गया था तो मेरी 3 बुक्स रिपेयर आ गई थी. मैंने मैथ पास किया था, और उर्दू, ये उर्दू हुआ था क्योंकि मुझे घर वालों ने एक मदरसा में डाला था, जिसकी वजह से मेरा उर्दू ठीक हुआ था, और मैथमेटिक्स में मैं ठीक था उस टाइम. तो ये बुक्स 2 पास तो हो गई, तो मैं दूसरे स्कूल में गया, गवर्नमेंट स्कूल में 11th 12th में. वहां से मुझे नहीं, 10th में फेल हुआ था, तो 10th के बाद मैं 11th और 12th में गया, तो उस स्कूल में जो दूसरे साइड में था, मतलब कि वहां मुझे जाना था
कुछ मतलब दूसरे साइड दूसरे प्लेस पे था, तो मैं वहाँ जाता था, तो वहाँ पर मुझे टीचर्स अच्छे से बिहेव करते थे, क्योंकि वो गवर्नमेंट स्कूल था, मुझे भी अच्छा लगा हुआ टीचर्स के साथ, मैं पढ़ने लगा अच्छे से। वो मुझे जब मुझे थोड़ी-थोड़ी प्रॉब्लम होती थी, तो वो मुझे बताते थे, "मोहसिन, कहीं प्रॉब्लम है तो हमें बता दो।" ये देयर वाज़ अ टीचर, उनका नाम था जमशीदा मैम, तो वो इंग्लिश टीचर थी। उन्होंने मुझे जितना भी पढ़ाया मुझे आज भी याद है। तो वो क्लास में आती थी, कहती थी, "मोहसिन, मैं यहाँ बस तुम्हें पढ़ाने आती हूँ और किसी को नहीं, यहाँ कोई पढ़ने के लायक नहीं है, बस तुम हो।" मुझे तब लगता था कि शायद मैं ज़्यादा शायद अच्छा हूँ इसलिए मुझे, लेकिन आज मुझे लगता है वो मुझे शायद फ़ोर्स कर रही थी कि मैं पढ़ूँ, लेकिन प्यार से। जो उनको पढ़ने का ये मुझे पढ़ाने का ये था, उनका स्ट्रैटेजी थी, वो मुझे आज मदद मिली कि मैं यहाँ पहुँचा। तो उन्होंने जब मुझे अच्छे से पढ़ाया, तो मैं 12th में ड्यू टू मेरी जो बेसिक स्टडीज़ थी वो फुल लैक थी, जिसकी वज़ह से मैं 10th में फ़ेल हुआ था। लेकिन उनका जो पढ़ाना मुझे, उन टीचर्स का मुझे पढ़ाना उस टाइम, मैं 12th में अच्छे मार्क्स से पास हुआ। और जब 12th में पास हुआ तो मैंने अपनी बहन को कॉल की। मैं घर में था, तो मेरी मम्मा बीमार थी, तो मैं खड़ा था, तो मैंने अपनी बहन को कॉल किया कि मैं पास निकला हूँ। तो उन्होंने भरोसा नहीं हुआ। उन्होंने दे गॉट शॉक्ड कि तुम कैसे पास हुए? क्योंकि जो कभी पढ़ता ही नहीं था, बुक्स खोलता ही नहीं था, उन शॉक हुए कि ये पास कैसे हुआ? इस टाइम पे सब मेरे मैं पास निकला था, लेकिन जो मेरे कज़न था और उनकी उनके उसके फ्रेंड्स थे, वो सब के सब फेल निकले। जो मेरा मज़ाक बनाते, जो मुझे रवींद्रनाथ टैगोर कहते थे, वो सब फेल निकले। मैंने उनसे कहा, अब वो मुझे मज़ाक बनाते थे, लेकिन मैंने उनसे कहा, अब कैसा लगता है? मतलब फेल निकलना कैसा लगता है? तो उन्होंने कहा, बहुत बुरा लगता है, कोई सपोर्ट ही नहीं करता, हर कोई मतलब अजीब नज़रों से देखता है। तो मैंने उनकी कभी टीज़ नहीं की, क्योंकि मैं उस मरहले से निकल गया था, आगे निकल गया था। उसके बाद जब 12th में पास नहीं हुआ, 12th के बाद मैंने कॉलेज जॉइन किया, लोकल कॉलेज ही, वही श्रीनगर में मैंने कॉलेज जॉइन किया। तो कॉलेज जॉइन के बाद ही मैंने एमए में एंट्रेंस दे दिया, तो मैं एंट्रेंस में क्वालिफाई भी हुआ। तो सब ये थे, शॉक थे, मतलब ये कैसे हो रहा है, मतलब इसके साथ कैसे हो रहा है, ये कैसे इम्प्रूव कर रहा है, बहुत तेज से इम्प्रूव कर रहा है, क्योंकि हर जगह सिलेक्ट हो रहा है। तो थोड़ी जलन भी थी उनकी, लेकिन जिसकी वजह से मेरे कजन मुझसे थोड़ा बात भी नहीं करते अब। लेकिन मेरा जो ये था, मतलब कि जो मुझे 11th-12th में थोड़ा सपोर्ट मिल रहा था टीचर्स की वजह से, जिसकी वजह से मैं थोड़ा आगे ज़्यादा ही मतलब थोड़ा-थोड़ा इम्प्रूव कर रहा था। लेकिन अगर ये मुझे फर्स्ट से ही मिल जाता, तो शायद मैं बहुत आगे होता, इससे भी आगे होता। लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है, फिर भी ठीक हूँ, जहाँ भी हूँ ठीक हूँ। और जब यहाँ पे सिलेक्ट हुआ, तो यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट मिला। एमयू में मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा सपोर्ट मिला, और मैं खुद को जानने भी लगा अच्छे से। मुझे आज घर वाले कहते हैं कि तुम्हें इंसान बनाया है एमयू ने। लेकिन क्योंकि मैं 11th-12th से थोड़ा बहुत अपने आप को समझने लगा था, जब टीचर्स ने मुझे सपोर्ट किया। यहाँ भी मुझे टीचर्स अच्छे से सपोर्ट करते हैं। तो फिर पैंडेमिक में एक लॉकडाउन जब हुआ, जब लॉकडाउन हुआ कोविड की वजह से, तो मैं घर आया था वापस। तो हमें एक बार, एक मेरी कज़न सिस्टर है बहुत बड़ी, उन्होंने मुझे बचपन में मतलब केयर की है बहुत ज़्यादा। लेकिन जब ये हुआ कि जब पैंडेमिक में घर गए, तो हम एक दरख्त पे बैठे थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि कोई काम ढूँढना था, अब बेकार कब तक रहोगे, अपने बाप पे कब तक बेकार रहोगे? तो मैंने उनसे कहा कि उन्होंने एक बहुत बैड लैंग्वेज यूज़ की मेरे लिए कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे, वैसे तुम कर भी क्या पाओगे? लेकिन मैंने कहा, अगर मुझे उस काम के भी पैसे मिले, वो भी काम करूँगा, मुझे बस काम करना है ज़िंदगी में। तो कुछ टाइम के बाद मैं जब घर में तंग हो आता था, तो मैं घर से बाहर निकला, तो बाहर एक शॉप है हमारी, राइस शॉप। तो मैंने वहाँ पे काम करने लगा, तो मैं वहाँ काम करने लगा, तो मुझे थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस हुआ, लोगों से मिलने लगा, वो एट स्टार्ट से। तो बाहर ही दूसरी जगह ही एक शॉप वाला था, जो फोटोस्टेट शॉप चलाता है, कंप्यूटर शॉप चलाता है। तो उन्होंने कहा, आ जाओ तो मेरे पास काम करने बैठ जाओ। तो मैंने उनके पास भी काम किया। उसके बाद एक रोड का कंस्ट्रक्शन निकलने वाला था, तो मैं एक बार ऐसे ही नज़र देने गया वहाँ पे, तो उन्होंने मुझे कहा, तुम आज से हमारे साथ काम कर लो। तो मैं वो अपने शेड्यूल ऐसे बनाते गया कि मैं 3 जगह काम करने लगा, और मुझे अच्छे खासे पैसे मिल गए। और वो कज़न एक बार वो हँसा, इसने कहा, अब कौन-सी जगह बची है जहाँ तुम काम नहीं कर पाओगे? लेकिन मैंने उस टाइम पे खुद को देखा कि अगर मैं खुद की तरह ध्यान दूँ, लोगों से ज़्यादा खुद की तरह ध्यान दूँ, तो मैं अपने आप को अपना बेस्ट वर्ज़न बना सकता हूँ। ऐसे एक बार मेरे पापा थे, तो वो बेहोश हो गए थे फैक्ट्री पे। तो जब वो घर आए, तो वो ऐसे ही पड़े हुए थे, तो जब उनको होश आया, तो उन्हें मुझ पे नज़र पड़ी। जब उनको मुझ पे नज़र पड़ी, तो वो वापस बेहोश हो गए। तो मैं वहाँ से भागा और बहुत दूर चला गया, और मुझे लगा कि शायद पापा को मेरी बहुत ज़्यादा ये है।
लेकिन जब ये काम मैंने किया 2-3 जगह काम किया तो मैं दिन में घर ही नहीं आता था, मैं घर का खाना भी नहीं खा पाता था दिन में। तो मेरी माँ कहती थी एट लीस्ट घर तो आ जाओ, एक बार खाना खाने के लिए तो आया करो। तो मैं मम्मा ने कहा कि एक कश्मीरी कहावत है कि अपने घर से दूसरी जगह काम ढूँढना चाहिए, लेकिन तुमने ये कहावत को तो तोड़ दिया, तुम अपनी जगह काम करो, इतना अच्छा काम करे। तो मैंने देखा कि इंसान को मैंने देखा एक डिसेबिलिटी इंसान के दिमाग में होती है, लेकिन एक उसकी बॉडी पार्ट्स पे। जब मैं घर से निकला तो मैं काम करने लगा। जब काम करने लगा तो मुझे लोगों ने कहा कि नहीं तुम कर सकते हो। इवन मेरे 2 भाई हैं, मेरे 2 बड़े भाई, उनको उतना ज़मीन का कोई इतना इल्म है ही नहीं, वो इतना काम ही नहीं कर पाते लैंड में जितना मैं कर पाता हूँ। क्योंकि मैं निकलता हूँ, जैसे निकलता हूँ तो उस काम को देखता हूँ, देखते आराम से तो होता सब कुछ है, क्योंकि वो कहते हैं स्लो एंड स्टेडी विन्स द रेस। तो मेरे साथ वही हुआ। मैंने बहुत पीछे काम स्टार्ट किया, लेकिन मैंने बहुत पढ़ाई भी बहुत पीछे की। जो मेरे साथ दोस्त थे पढ़ाई पढ़ते थे वो मेरे लेवल पे ही आ गए, कुछ मेरे पीछे हो गए, लेकिन मैं कहीं कहीं ना कहीं पहुंच रहा हूँ। मुझे लगता है कि इंसान जब अपने आप को देखे, अपनी अपनी डिसेबिलिटी को छोड़कर आगे बढ़ना स्टार्ट करे तो सब कुछ आसान होता है। इस बरक्स मैं कहूँ कि क्या अगर फर्स्ट से जब एक बच्चे को ऐसे डिसेबल बच्चे को एक ऐसे स्कूल में डाला जाए जहाँ पे टीचर्स अगर अच्छे न हो तो एक पेरेंट्स रोज अपने बच्चे को टीचर से इंटरेक्ट करे, नहीं हमारे बच्चे में क्या कमजोरी है, इनको इनको रेमेडीज क्लास में डाल दिया जाए, उनको इनकी देखी जाए वो कहाँ लैग कर रहे हैं, तो उनको ज्यादा से ज्यादा और फोर्स दिया जाए और उनको ज्यादा रीइंफोर्समेंट दिया जाए ताकि वो जो मैंने फेस किया वो ना कर पाए। शुक्रिया। Thank you, Mohsin Ibrahim. Mohsin Ibrahim is a basically physically challenged student and he's pursuing MA. What he faced in his life till date, he has shared with you. There is another physically challenged female students. And of course, if a person is male and he is facing so many problems, similarly, if a person is female or a disabled person is female, of course, she must be facing a lot of problems. And we can understand very easily. But as far as experience is concerned, I think Sazia Parveen will tell you better what she experiencing in spite of her orthopedic disability. That is Sazia Parveen, student of B.Ed from AMU Aligarh. Sazia, can you hear me? Yes, sir. Okay, Sazia, please share your views and your experiences in short. Sazia. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम सलाम। मेरा नाम साजिया परवीन है। मैं कटिहार जिले की रहने वाली हूँ, बिहार से। और मैं बेसिकली फिजिकली हैंडीकैप हूँ। मेरे दोनों पैर और हाथ में प्रॉब्लम है। और मैं यहाँ पे जितने भी यहाँ पे ज़्यादातर सब टीचर है, तो मैं बेसिकली अपने प्रॉब्लम जो हम फेस करते हैं अपने स्टडीज़ में, मैं उनके बारे में आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ कि हम लोग क्या-क्या चीज़ें फेस करते हैं। कि जैसे कि हम लोग बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो देख नहीं पाते हैं, विजुअली इम्पेयर होते हैं। और उन लोगों को या जैसे कि मैं खुद लिख नहीं पाती हूँ, मुझे हाथ में प्रॉब्लम है, मुझे लिखना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन मैं ट्राई करती हूँ। लेकिन ऐसा हो जाता है कि हम लोगों को बहुत ज़्यादा असाइनमेंट दे देते हैं टीचर, और इनको करना बहुत मुश्किल होता है। अगर हम क्योंकि हम खुद से नहीं लिख सकते, हम दूसरे से हेल्प लेते हैं। लेकिन हमेशा हमें हेल्प नहीं मिल पाता है, बच्चे नहीं हमेशा फ्री नहीं होते हैं। इस वजह से अगर हम किसी से पेड वर्क कराते हैं, अगर पैसे देके हम काम कराते हैं, तो हमें बहुत ऐसे बच्चे हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते इतने पैसे कि वो अपने असाइनमेंट को कर सके। तो मुझे लगता है टीचर को देखना चाहिए कि बच्चे जिस चीज़ में ठीक है, जैसे कि जो बच्चे ब्रेल लिपि में लिख सकता है, उसको ब्रेल लिपि में लिखने के लिए दे दिया जाए। और जो बच्चे बोलना चाहता है उस चीज़ को स्पीच के तौर पे, अगर वो क्लास में असाइनमेंट को अपने स्पीच में बोल दे, तो उनको इस तरीके से सहूलियत दिया जाए ताकि हम किसी और पे डिपेंड ना रहें। और जो बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जिनको ब्रेल लिपि नहीं आता है पढ़ने के लिए, तो वो उस बच्चे से बोले कि वो पढ़े और उसी के हिसाब से वो मार्क्स दे। और क्योंकि ये चीज़ें मैंने देखा है जामिया मिलिया इस्लामिया में,
ऐसा होता है, लेकिन हमारे एमयू में ऐसा नहीं होता है। मुझे लगता है कि टीचर को इन चीज़ों पे थोड़ा-सा ध्यान देनी चाहिए। और जब हम लोग एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं, तो हमें कभी-कभी स्टूडेंट मिलता है, तो उनको एक्सपीरियंस होता है कि हम कैसे ओआरएस शीट फिल करें। लेकिन कभी-कभी जैसे कि एमए हिस्ट्री में हम लोगों को स्टाफ वर्कर मिलते हैं जिनके एक्सपीरियंस नहीं होता है, क्योंकि वो बहुत पीछे छोड़ चुके हैं वो अपनी स्टडीज को, अपने कामों को। इस वजह से वो क्या करते हैं कि जैसे हम लोग एग्जाम देने जाते हैं, उनको मैं बताती हूँ कि आप मेरा नाम और रोल नंबर ठीक से लिखिएगा, क्योंकि अगर ये गलत हो गया तो फिर मैं पास नहीं कर पाऊंगी। लेकिन अक्सर यही होता है कि वो नाम भी गलत लिख देते हैं और रोल नंबर भी। और चलो मुझे दिखता है तो मैं कहती हूँ कि यहाँ पे गलती हो गई, और फिर जब मैं सीट मांगती हूँ, सर ये गलत हो गया है और मुझे दूसरा सीट दे, तो वहाँ मिलता नहीं है दूसरा। फिर क्या होता है कि जिन बच्चे को नहीं दिखता है उनका तो ऐसा ही होता है कि वो देख नहीं पाता है, जैसा वो बढ़ता है। और फिर जब हम रिजल्ट देखने जाते हैं, हमारा नाम नहीं आ पाता है, क्योंकि मेरा खुद एमए हिस्ट्री में नाम नहीं आ पाया था, क्योंकि उसने मेरा रोल नंबर भी और मेरा नाम भी गलत लिखा था। तो मुझे लगता है कि इन चीजों में थोड़ा ध्यान दिया जाए कि हमें ऐसे लोगों को, एटलीस्ट ऐसे लोगों को हमारे राइटर बनाए जो थोड़ा-सा नॉलेजेबल हो, कि वो बस लिख सके, उस ओएमआर शीट को भर सके। इतना, एटलीस्ट इतना हो एक्सपीरियंस उनको। और अम, मैं यहीं पे अपनी बातें खत्म करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। ठीक है सर, थैंक यू। नेक्स्ट वन इज मिस्टर इमरान नबी भट्ट। इमरान? Yes, sir. Yeah. Please share your. Imran Nabi Bhatt is a student of B.Ed, or he is visually challenged. Imran, can you share your own views, your challenges in short? Yes, sir. Sir, before I will share my thoughts, so I want to express a little about. Actually, I have a friend. He is also visually challenged student. He is researching on visual. Sorry, he is challenging on disability. So, is it possible he will share his thoughts as extent of me? No problem. Okay. You, Muhammad Yamir? Wait a second, sir. बोलिए. Muhammad Yamir is there? Yes, yes. Yeah, so he is doing research on disability. So I think he will better elucidate his thoughts. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Walaikum salam. Am I audible? Thank you, sir, for giving me opportunity to present myself here. And myself, Muhammad Ayub Mir from Kupwara, Kashmir, a very far-flung area in the northern area of Kashmir. सर, जहाँ तक मेरी बात है, मैंने अपना जो 12th तक की पढ़ाई है वो कश्मीर से ही की है। मैं बाय बर्थ विजुअली इम्पेयर्ड हूँ, और उसके बाद मेरी जो पढ़ाई हुई है बीए और एमए, वो मेरा बीए पॉलिटिकल साइंस फ्रॉम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी और एमए फ्रॉम द सेम यूनिवर्सिटी इन द सेम डिपार्टमेंट, और विद यूजीसी नेट जेआरएफ आल्सो। एंड रिसेंटली आई हैव जो इसका पीएचडी का इंटरव्यू भी दिया है, तो रिजल्ट का वेट कर रहा हूँ सर। ये तो सर मेरी एकेडमिक थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन हो गई, और इसके साथ साथ आई एम एंगेज्ड इन डिफरेंट सोशल एक्टिविटीज़। सोशल वर्क में भी एंगेज रहा हूँ शुरू से ही, बचपन से ही, मतलब क्लास 6 से सोशल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करता रहा, और डिफरेंट प्रोग्राम्स, क्विज इवेंट्स स्टूडेंट्स के लिए ऑर्गेनाइज करता रहा, not only for the person with disabilities but for the mainstream society also. तो लेकिन जहाँ तक मैंने क्या देखा है अपने, मतलब अपनी लाइफ में एज ए पर्सन विद डिसेबिलिटी, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपके साथ वो शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले जब मैं मतलब फ्रॉम क्लास 1st to 10th तक मुझे नहीं पता था कि ब्लाइंड, मतलब मुझे थोड़ा बहुत दिखता था, तब 8th तक मुझे थोड़ा बहुत दिखता था, बट 8th में मेरी रोशनी कम हो गई, तो मुझे नहीं पता था कि एक ब्लाइंड पढ़ भी सकता है, कोई ब्रेल भी होता है, दुनिया में कोई चीज़ होती है, या कोई ब्लाइंड कभी फ़ोन भी चला सकता है। मुझे कुछ भी नहीं पता था इसके बारे में। तो उसके बाद जब मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता था, और मैं सोचता था कि मैं कोई ऐसा काम करूं, या तो मैं, मतलब मैं आपके साथ एक, आपको थोड़ा सा हंसी भी आएगी इस चीज़ पे, लेकिन मैं कहूँगा आपकी अपनी बात। मैं कोई इस तरह का काम करूँ जैसे वो पीर फकीर वाला काम, मतलब कहीं पे इस तरह का काम करूँ जो मैं लोगों को एक तावीज़ वावीज़ दूँ बस, या तो कोई म्यूजिक का काम करूँ
तो जो मैं कर सकता हूँ, बाकी मैं किसी के काम के लायक नहीं हूँ। तो फॉर्चुनेटली उसके बाद मुझे एक टीचर मिले, अल्हम्दुलिल्लाह, उनका नाम है मोहम्मद मकबूल साहब। तो उन्होंने मुझे क्या कहा कि बेटा, आपके लिए डिफरेंट स्कूल्स होते हैं जो आपके लिए बनाए जाते हैं, और श्रीनगर में भी एक स्कूल है जहाँ पे आपको इस बारे में पता चलेगा। तो मैं उस स्कूल में गया, तो वहाँ पे मुझे उन्होंने बोला कि ब्रेल होता है एक सिस्टम जिसकी वजह से आप पढ़ सकते हो और ऑडियो बुक से आप पढ़ सकते हो। तो लेकिन एक बात ये कि मैं पढ़ने पढ़ने के मामले में शुरू से ही ज़हीन था, मतलब मुझे चीज़ें याद रहती थी अच्छे से, और मैं स्कूल में शुरू से ही एक उस मतलब लीडर पोजीशन पे रहा हूँ, मतलब स्टूडेंट एक्टिविटीज़ में मैं शुरू से एंगेज रहा हूँ। तो उसकी वजह से वो चीज़ें मुझे बहुत हेल्प करती थी। लेकिन पढ़ाई में बहुत दिक्कत होती थी। लेकिन फिर मैंने थोड़ी बहुत ब्रेल सीखी 11 जब मैंने 10th क्लास पास किया, 10th भी मैंने अच्छे नंबरात से पास किया, और उसके बाद मैंने ब्रेल और ऑडियो से पढ़ना शुरू किया, और फिर मैं देहरादून भी गया 3 मंथ्स के कोर्स के लिए। तो वहाँ पे मुझे पता चला कि जो ब्लाइंड स्टूडेंट्स होते हैं वो पढ़ सकते हैं, वो पीएचडी कर सकते हैं, वो कुछ भी बन सकते हैं। फिर मैंने बहुत सारे देहरादून में देखे कि जो मतलब टीचर भी बनते हैं। फिर मेरे अंदर एक इस तरह का पैदा हुआ कि मैं कुछ बन सकता हूँ अपनी लाइफ में, कुछ अच्छा कर सकता हूँ। तो फिर मुझे देहरादून में एक भाई मिले जिन्होंने अलीगढ़ से ही बीए किया था। उन्होंने मुझे कहा कि अलीगढ़ में आपके लिए डिफरेंट डिफरेंट मतलब स्कीम्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं जिनकी वजह से आप अपने आपको वहाँ ज़्यादा एक्सेल करोगे। तो फिर मैंने एएमयू का एंट्रेंस दिया। तो 2017 में मैं यहाँ बीए के लिए आया। तो पहले 6 मंथ्स मुझे बहुत ही बोरिंग यहाँ पे लगे, कुछ समझ नहीं आ रहा था मुझे क्या क्या करूँगा, कैसे करूँगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह, विद द हेल्प ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह एंड विद द मतलब support of my great teachers like Professor Mohibul Haq sir, Parvez Alam sir in the Department of Political Science, and late Jibril sir from Department of History। तो इन टीचरों से मुझे बहुत इंस्पायर किया और बहुत हेल्प की, और डेडिकेशन से मेरी हेल्प की। और यहाँ पे जो हमारे सीनियर ब्लाइंड भाई हैं, समर भाई हो गए, या और भी हमारे यहाँ पे जो विजुअली इम्पेयर्ड भाई हैं, उन्होंने मुझे बहुत इनकरेज किया कि भाई आप कर सकते हो हमारी तरह, जैसे हमने पीएचडी किया है। तो फिर मैं आगे बढ़ने लगा। और मैं आपके साथ ये बोलूं कि मैंने बीए में भी विदाउट एनी टेकिंग एनी हेल्प फ्रॉम एनी स्क्राइबर और एनीथिंग एल्स, आई टॉपर द क्लास इन बीए। मैं अपने टॉपर रहा हूँ अपने क्लास में बीए में। और फिर कोविड में हमारा मास्टर्स हुआ, और मास्टर्स के साथ साथ मैंने यूजीसी नेट जेआरएफ की पूरी तैयारी की, अच्छे से तैयारी की। और अल्हम्दुलिल्लाह इन द सेकंड अटेम्प्ट आई क्वालिफाइड यूजीसी नेट जेआरएफ। तो यहाँ तक कि मेरी ये है। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ कहूँगा कि इसमें टीचर का बहुत बड़ा रोल है मेरी लाइफ में। अगर कुछ रोल है तो वो ज़्यादातर मैं टीचर को ही मतलब ज़्यादातर वो क्रेडिट दूंगा। हाँ, बेशक मेरी फैमिली का भी रोल है, ऐसा ऐसा मैं नहीं कह सकता हूँ फैमिली का रोल नहीं है। बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि फैमिली का रोल नहीं है, वो गलत कहना होगा। बल्कि इंसान जब कामयाब होता है, उसकी कामयाबी में हर एक चीज़ का रोल होता है। हर एक इंसान एक गाड़ी की तरह है जिसमें पहियों का रोल होता है, इंजन का रोल होता है। तो इसी तरह मेरी लाइफ में हर एक का रोल है, चाहे मेरा फ्रेंड हो, चाहे मेरा दोस्त हो, इवन कि मेरा अगर कोई दुश्मन भी हो, वो भी उसका भी मेरा रोल है। अगर उसने मुझे कहीं पे क्रिटिसाइज किया होगा तभी मैंने कुछ कहीं पे इम्प्रूव किया होगा। तो यहाँ तक मैं अपने वर्ड्स को यहाँ पे एंड करना चाहूँगा। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया आफ्ताब सर कि आपने मुझे यहाँ पे बोलने Ayub का bhai, मौका how, दिया। how many challenges you faced during academics, and what did you expect from the teachers in future? Yes, of course. In academics, I definitely face many challenges. First, I already told you that when I was in class 8, I had no idea about braille system or how blind people are, reading books, how they, Then then I know about this thing. I tried my level best to, improve myself. But when it comes to present time, definitely I have many challenges, but right now I am not able to use various softwares which are hampering my academic growth. But I am saying that it is not the lack of technology or anything else which is hampering this, but rather it is a lack of awareness. If I am being provided a full awareness about the things, definitely I will do much better than what I am doing right now. So but when it comes to teachers, there is a very मतलब टीचर्स के जहन में ये होता है कि शायद ये बच्चे अभी भी यहाँ इवन कि एएमयू में भी थोड़ी बहुत टीचर्स में उतना वो मतलब है, बहरहाल बहुत अवेयरनेस है, लेकिन बहुत अवेयरनेस की अभी थोड़ी बहुत कमी है। तो उसके लिए हमें ये करना चाहिए कि हमें पूरा रिस्पॉन्सिबल इसके लिए टीचर्स को नहीं ठहराना चाहिए। अगर हम ये कहेंगे कि भाई इसके लिए टीचर्स ही सारे रिस्पॉन्सिबल, ये कहना गलत होगा। बट इसमें ये एक मतलब सॉर्ट ऑफ बायलैटरल एंगेजमेंट होनी चाहिए,
जहाँ पे जो डिसेबल बच्चे हैं, फॉर एग्जांपल AMU में, अगर मैं AMU की बात करूँगा कि डिसेबल बच्चे जितने भी AMU में हैं उनको और कंसर्न टीचर्स के साथ मिलना चाहिए, एक तरह का प्रोग्राम होना चाहिए जहाँ पे हम अपने व्यूज़ को एक्सचेंज कर सके, जहाँ पे हम बोले अपने टीचर्स को सर हमें यहाँ पे प्रॉब्लम है, आप हमें यहाँ पे इस तरह की हेल्प चाहिए। तो अगर इस तरह का एक एंगेजमेंट होगा, एक म्यूचुअल, जिसको हम कहेंगे म्यूचुअल इंटरेक्शन होगा, तो आई होप कि जिस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो एटीट्यूडल प्रॉब्लम्स हो या फिजिकल प्रॉब्लम्स हो, आई थिंक आई एम होपफुल कि ऑल दोज प्रॉब्लम्स विल बी, if not totally eradicated, but will be minimized to a greater extent. ठीक है Ayub. Thank you Ayub Thank you. for sharing your own experiences. Dear participant, as we know that the Constitution of India also ensures equality, freedom, justice, dignity of all individuals, and implicitly mandate an inclusive society. So, after hearing these, their experiences of these differently abled people, one thing I would like to mention here, that a person who is having visually challenged or orthopedically challenged, and he is a male, and the same disability is for a female, have great differences, because the female have more challenges than the male. That's why I try to brought the one male and one female. So these are just so many challenges which they have told you. The biggest barrier which I have, I'm going to conclude with these points, that is socio-psychological barrier. Society is not ready to accept them, and their mentality, that is always trying to have a different kind of attitude, that is called socio-psychological barrier. What are the attitude of the society? They are ready to accept. This is the most challenging barrier for disabled person. समाज तैयारी नहीं आती भी 21st सेंचुरी, इतना हम आगे निकल चुके हैं, सारी बैकवर्डनेस को छोड़ चुके हैं, फिर भी हम इन्हें एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है. बाय द स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी इन फिजिकल एंड इमोशनल बुलिंग, कहीं ना कहीं हम उनको उनके डिसेबिलिटी के नाम से पुकारते हैं कि ये फला है तो ये इसकी ये कमी है तो उस नाम से बोल दिए, इसकी ये अगर दिखाई नहीं रहा तो मुझे ब्लाइंड बोल दिए, लाइक दैट. Society treat them as that the object of ridicule and outright ostracism in the school and community. और ये बात सिर्फ एक नॉर्मल सोसाइटी नेबरहुड में नहीं है, बल्कि स्कूलों तक ये पहुंच गई है. स्कूलों में ये है कि हम वहां भी उन्हें इस तरह से ट्रीट करते हैं. अभी आपने मोहसिन का सुना था, फिर उसके बाद शाजिया का भी सुना आपने, फिर अभी यूब बता रहे थे. As with societies in general, it is important to a strong advocacy. जब तक समाज अब आगे नहीं आएगा ना, तब we cannot bring them in the mainstream. चाहे जितनी भी गवर्नमेंट पॉलिसी बना ले, प्रोग्राम बना ले, इंस्टीट्यूट काम कर ले, until unless the society is not ready to accept them, not ready to change his or her, society is not ready to change the attitude towards the disabled children, they cannot brought into the mainstream. The next one is physical barrier. For example, the lack of wheelchair ramps. The infrastructure which we build up today, whether they are physical, disabled friendly, university, colleges, buildings, government offices, building, malls, parks, playgrounds, washrooms, and public transportation, how they have their own structures, whether the disabled person can easily access to those offices, to those universities, colleges, and public buildings. Of course, there are some barriers, that is physical barrier. Undoubtedly, most educational institution structures do not respond to these requirements. बहुत सारे ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इवन जो आज बनाए जा रहे हैं, उसमें भी ऐसे आपके पास बैरियर फ्री नहीं है जहां की आसानी से ये डिसेबल बच्चे या डिसेबल लोग आसानी से उसमें एक्सेस कर सके. There is a lack of facilities like assistive device to aid the children with particular type of disability. Assistive technology, बहुत सारे ऐसे टेक्नोलॉजीज हैं जो बहुत आसानी से डेवलप हो चुके हैं, उसको हम बहुत आसानी से इम्प्लांट कर सकते हैं. एंड फॉर स्पेशली फॉर दीज पीपल, वॉइस डिवाइसेज आ गए, आप आवाज देंगे, बोलेंगे, क्लैपिंग करेंगे, दरवाजा ओपन हो जाएगा. सो आई थिंक दोज हु आर disabled person, they cannot handle this situation, they cannot handle that buildings. If we use such kind of accessible devices, that will be more fruitful and easy for such kind of differently able person. Political barrier. Policy makers who have
sound grasp or opposing view on inclusive education. The policy maker, those who are making the policy, they don't have the knowledge about the inclusive education. And if they have, they are not ready to accept. And if they are accepting half-heartedly. So these are some obstacles to the implementation of inclusive policy. So there is need to political willpower. These obstacles in inclusive education consist a short list of factors that can affect the students with disability. So another one is financial barrier. If you will see that adequate financial resources are a big challenge. Of course, if you want to develop any infrastructure, we need a lot of and handsome amount to develop that infrastructure. And you know that India is among the countries that have the lowest low education for all index. हम उसमें आते हैं. Education for all का index है EDI, उसमें lowest वाले में हमारी category. For inclusion, every institution would be required to make financial provision for providing facilities like lift, ramp, barrier-free, classroom, toilets, etc. इसके लिए financial finance की जरूरत है, and that is not sufficient for development of such kind of facilities for the disabled person. Technology could be used. बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है जो मैंने अभी बताया आपको, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं. But again, that requires a handsome amount of finance. College, university as a barrier. What is how the college is barrier? अब इतनी सारी बातें जानने के बाद भी हम अपने आप को एक बैरियर की लाइन में खड़ा करके रखें. पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट बैरियर आता है वो आता है इनरोलमेंट एंड एडमिशन. हमारी अपनी एक जो मतलब मैं जो मानता हूं कि हम अगर ऐसे बच्चे को देखते हैं तो वी ट्राई टू एस्केप. हम चाहते नहीं कि हमारे कॉलेज में आए, हमारे यूनिवर्सिटी में आए, हमारे स्कूल में आए. हम ऑलवेज इग्नोर करना चाहते हैं. फर्स्ट पहले ही मौके पे उससे हम चाहते हैं कि वो एडमिशन ना ले, हमारे वहां इनरोल ना हो, वरना तमाम तरह के चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स और डेटा इंफॉर्मेशन सेपरेटली शुरू हो जाएगा. बिल्डिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो वो भी हमारे पास सफिशिएंट और डिसेबल्ड फ्रेंडली नहीं होता है. अगेन दैट इज द बैरियर. क्लासरूम साइज एंड पैटर्न, अगेन दैट क्रिएट्स हर्डल. कम्युनिकेशन, अभी एक बच्चे ने बताया आपको कि हाउ यू कम्युनिकेट एंड हाउ वी शुड कम्युनिकेट टू दोज पीपल who are under the suffering from the different kind of disability. How you behave with them, that is another aspect, and how you communicate with them, how you talk with them. But पहला जो important aspect है वो ये हमारा उनका इंटरेक्शन होता ही नहीं है. We don't interact with them. वो क्लास में बैठे रहते हैं, वो खामोशी से बैठे रहते हैं, हम उनसे कोई सवाल करते हैं और नहीं सवाल करने का नतीजा होता है वो भी हमसे इंटरेक्ट नहीं हो पाते. So the first and foremost the duty of the teacher and educational institution that to interact them, involve them in our teaching learning process. Curriculum, we have to restructure our curriculum according to these people and their special needs. And untrained teacher, of course, the teachers are untrained, especially about the inclusive education. They don't have much more knowledge about the inclusion. They don't know the philosophy of inclusion. They don't know the techniques, how to include them in the mainstream of classroom. And this is, of course, this is not the individual fault of the teacher. But after knowing this, after attending such kind of programs, if you are unable to, if you are not ready to accept them, then this is of course, this will become a barrier. Lack of guidance cell. कोई ऐसा स्पेशल गाइडेंस सेल, स्पेशल की तो छोड़ दीजिए, जनरल गाइडेंस सेल कोई नहीं है प्रॉपर्ली हमारे कॉलेज यूनिवर्सिटीज में, और है भी तो फंक्शनिंग में नहीं है. बस एक बोर्ड लगा हुआ है, ये गाइडेंस सेल है इंस्टीट्यूट का, कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का, बट वी डोंट हैव एनी प्रॉपर सेल. बट देयर इज नीड टू प्रोवाइड प्रॉपर गाइडेंस टू दोज पीपल हु आर डिफरेंटली एबल्ड. इफ पॉलिसी पर्सपेक्टिव देखें, मैं उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा, बहुत सारे अमेंडमेंट्स हैं. रोड मैप की बात करें अगर हम देखें, यहाँ पे एक लास्ट पॉइंट में आता हूं, दैट इज द रोल ऑफ टीचर एडमिनिस्ट्रेटर इन इक्विटी एंड इंक्लूजन. दीज आर द सम स्पेसिफिक roles which we can discharge, which we can play very important in our day-to-day teaching learning process, even in our classroom. Identify and accept the children with disability. अगर आप नहीं जानते हैं तो आप जानने की कोशिश करिए कि आपकी क्लास में कौन सा बच्चा है जो one or other way disabled है, और अगर आपको पता हो गया तो you must accept them wholeheartedly, not half-heartedly. आप उसे accept करें, उसे groom करें और उसे मेन स्ट्रीमिंग में लाने की कोशिश करें.
acquire knowledge about the inclusion. अगर आपको नहीं पता है, try to know the new developments in inclusive education. नॉलेज की कोशिश करें, इस तरह के सेमिनार, कॉन्फ्रेंसेस, वर्कशॉप और प्रोग्राम्स को अटेंड करने की कोशिश करें, तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें आप आसानी से जान सकते हैं। और हैविंग पॉजिटिव एंड फ्रेंडली एटीट्यूड टुवर्ड द डिसेबल्ड स्टूडेंट। अभी आपने देखा कि मौसिम बता रहे थे, एक स्टूडेंट, एक टीचर थे उनके, जिन लोगों ने उनके प्राइमरी एजुकेशन में किस तरह से बिहेव किया उनके साथ कि टीचर कम्युनिटी से ही उनको नफरत हो गई। और एक टीचर जो उनकी कोई मैडम थी जिन्होंने थोड़ा सा सिंपैथेटिकली और बहुत ही अफेक्शन के साथ में डील किया, तो ही स्टार्टेड ग्रोइंग। एंड हालत ये है कि अपार्ट फ्रॉम हैविंग द डिसेबिलिटी, ही हैज रीच्ड फ्रॉम कश्मीर टू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एंड ही ज्वाइंड एंड ही इज एक्सेलिंग वेरी गुड। और एक बच्चे ने आपको बताया ग्रुप में कि वो तो टॉप किया अपने ग्रेजुएशन में, और एक बच्ची जो इतने दूर दराज से आई हुई है, एक छोटे से जिले बिहार के जहाँ से बहुत लोग आते हैं, और जामिया में पढ़ी, फिर जामिया के बाद बीएड का टेस्ट क्वालिफाई किया और यहाँ पे एडमिशन की। सो देयर इज जस्ट नीड टू हैव द पॉजिटिव एंड फ्रेंडली एटीट्यूड टुवर्ड द डिसेबल्ड स्टूडेंट्स, डेवलपिंग पॉजिटिव एटीट्यूड बिटवीन नॉर्मल एंड डिसेबल्ड चिल्ड्रन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक टीचर को नेवर ट्राई टू क्रिएट a line or create I will say that a kind of differentiation between the normal and disabled children. अक्सर हम कह देते हैं अपने नॉर्मल बच्चों से, कह रहे बेटा देखो वो डिसेबल्ड है, जरा देखो उसको दिखाई नहीं दे रहा है, देखो उसके पैर, वो पैर से माजूर है। अब उसका इम्पैक्ट जो होता है ना, वो क्या होता है कि हमारे जो नॉर्मल बच्चे हैं, they also started treating them like that and that creates problem। अब वो उनके दिमाग में फॉर एवर के लिए बन जाता है। लेट देम डिस्कस विद देयर ओन। क्या पता कि वो डिसेबल्ड बच्चा है, उस एबल्ड बच्चे की मदद कर रहा हो, बिकॉज दे आर ओनली डिसेबल्ड इन वन एस्पेक्ट बट ऑल देयर फंक्शनलिटीज आर वेरी गुड, ऑल देयर ऑर्गन्स आर फाइन। सो दिस इज द वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट दैट वी कैन टेक केयर ऑफ। वी शुड नॉट क्रिएट बैरियर बिटवीन द नॉर्मल एंड डिसेबल्ड चिल्ड्रन। Introducing compensatory education. If someone is having any kind of problem, any kind of situations, जैसे कि अभी शाजिया ने बताया कि अगर आपको ब्रेल नहीं आती है तो आप ब्रेल में लिखवाइए, अगर बच्चा लिख नहीं पाता है तो उसको आप ओरल एग्जाम ले सकते हैं। बहुत सी चीजें हैं ऐसी, सेशनल टेस्ट आप ले सकते हैं, उसको ओरली, उससे असाइनमेंट ले सकते हैं, उससे कोई जरूरी नहीं कि आप सेशनली लें, उससे ओरल प्रेजेंटेशन करवा सकते हैं। That she can do, that they can do very easily. So that is the inclusive approach you may adopt it. Acquiring and enhancing the knowledge how to teach the disabled. Raise your qualification, diplomas and degree. There are so many diplomas and degrees on inclusive education through distance mode and online mode. And if we can do and we can conduct, achieve that degrees and diploma and that qualification, so I think our knowledge, how to teach them, how to teach and deal such kind of disabled children, this problem can be solved very easily. तो हम चाहे तो हमसे कर सकते हैं, पार्ट टाइम भी होता है, ऑनलाइन भी होता है, और बहुत सारे इंस्टीट्यूट डिस्टेंस मोड के कराते हैं इस तरह के कोर्सेज। और साइकोलॉजिकल एम्पावरमेंट ऑफ डिसेबल्ड चिल्ड्रन, थोड़ा सा उनके ऊपर आप जो होता है ना, हम सिंपैथी जो दिखाते हैं, दया भाव, उस दया भाव को ना दिखा के हम उनकी साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करें। हम उन पर कोई रहम करने की जरूरत नहीं है कि हम उनको हाथ पकड़ के एक जगह से रोड से उस रोड क्रॉस कर दिए तो हमने बेहतर नहीं पार कर लिया, ऐसा नहीं है। हम उनके साइकोलॉजिकली उनको एम्पावर करें कि वो आपके साथ कंधा से कंधा मिला के चलने की कोशिश करें। तो मुझे लगता है कि उनकी आज भी जो प्रॉब्लम होती है, हाफ प्रॉब्लम्स ऑफ द डिसेबल्ड चिल्ड्रन लाइज इन देयर साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट। अगर वो साइकोलॉजिकली एम्पावर्ड नहीं होते हैं तो दे आर फेसिंग सो मेनी चैलेंजेस। एंड द नेक्स्ट वन इज स्पेशल केयर एंड अटेंशन टू बी टेकन बाय स्पोर्ट टीचर। ये अक्सर मैं मेंशन करता हूं कि जो स्पोर्ट टीचर होते हैं वो कभी ऐसे बच्चों को अपने टीम में जगह ही नहीं देते हैं। वो समझते हैं कि ये बच्चे क्या करेंगे, ये तो प्रॉब्लम है हमारी क्लास में, हमारे टीम में। ऐसा नहीं हो सकता है। जब एक प्लेयर जब कभी घायल हो जाता है, बैट्समैन, तो हम उसको रनर दे सकते हैं। तो अगर कोई बच्चा एक पैर से माजूर है बट ही कैन स्टैंड प्रॉपर्ली, ही कैन हिट प्रॉपर्ली द बॉल, देन व्हाई वी कैन नॉट गिव देम चांस। तो ऐसा भी हो सकता है, एक बार चांस देना चाहिए, देखना चाहिए आपको क्या होता है। तो ऐसा है कि स्पेशल केयर स्पोर्ट टीचर के लिए मैं स्पेशली ये कहना चाह रहा हूँ कि उन्हें भी मौका देना चाहिए। चलिए मान लेते हैं कि वो रनिंग नहीं कर सकता है, बॉलिंग नहीं कर सकता है, अंपायरिंग कर सकता है वो कम से कम,
वहां पे उसे खड़ा करा दीजिए। चलो अंपायरिंग में नहीं कर सकता, स्कोरिंग कर सकता है। He can be involved anyhow, and he must involve anyhow such kind of students, and if they are interested. So this is the one of the role of teacher may be there, and a special arrangement for their examination, disabled friendly sitting arrangement. ताजिया ये बता रही थी कि अगर ऐसे ऐसे राइटर दे दिए जाते हैं कि इवन दे डोंट नो टू राइट। अब मैं जानता हूँ अच्छी अच्छी तरह से कि, और ये एज पर लॉ भी है कि उन्हें 30 मिनट्स ज्यादा देने की प्रोविजंस है, तो हम उन्हें देते ही नहीं है। कई जगह पे नहीं दिया जाता है, कई इंस्टीट्यूट में या 15 मिनट देते हैं, जल्दी खत्म करो कह के जल्दी कॉपी ले लेते हैं, बिकॉज दे हैव देयर राइट्स, दे हैव देयर सच काइंड ऑफ डिसेबिलिटी, सो देयर चांस मस्ट बी गिवन। Collaborating with the medical and psychological panels, social workers, parents and special faculty. तो ऐसे लोग जो उस फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं उनको भी इंटरेक्शन होना चाहिए, so that we can solve their various big challenges, big issues. Parental guidance and counseling. अब अगर कहीं काउंसलिंग होती भी है ना, तो सिर्फ हम उन बच्चों का करते हैं जो उस डिसेबिलिटी में मुब्तला है, उस डिसेबिलिटी में है। हमने कभी उनके पेरेंट्स के ऊपर कोई काम करने की कोशिश नहीं की। Being a teacher, this is our duty to somehow interact with their parents. If not every day, at least we can meet them in a month on the parent-teacher meeting, if it is the school. और अगर कोई स्पेशल केस की बात है तो हम उन्हें बुला भी सकते हैं और उस पर हम डिस्कस कर सकते हैं कि हाँ भाई इसमें क्या हो सकता है, आपके बच्चे क्या प्रॉब्लम है, आपका क्या कंट्रीब्यूशन है, हाउ यू आर प्लेइंग द रोल टू ब्रिंग देम इन द मेन स्ट्रीम ऑफ सोसाइटी। तो और पब्लिक अवेयरनेस की बात कर सकते हैं हम। बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटी कॉलेज एक्टिविटीज हम करा सकते हैं जिसमें पब्लिक को इन्वॉल्व कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ अचीवमेंट एंड डायग्नोस्टिक टूल, बहुत सारे ऐसे टेस्ट है, टूल्स हैं जिसके थ्रू हम इनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट को चेक कर सकते हैं कि कितना इनके अंदर प्रोग्रेस हो रहा है। तो वो सारी चीजें भी हमको स्पेशली फॉर स्टैंडर्डाइज एंड कंस्ट्रक्टेड फॉर डिसेबल चिल्ड्रन, तो हम उसे यूज करके उनकी प्रोग्रेस को देख सकते हैं। एडेप्टेशन इन इवैल्यूएशन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, और उनको सिचुएशन के साथ एडेप्ट कराने का भी हम ट्रेनिंग दे सकते हैं कि किस तरह से वो सिचुएशन को एडेप्ट करें, और फिर उसको इवैल्यूएट किया जा सकता है कि हाउ मच दे आर रेडी टू एडेप्ट द सिचुएशन एंड इवैल्यूएट देम व्हाट आर देयर स्पेशल नीड्स। लास्ट, celebration of disability day, that is 3rd December of every year. Organize various events in your institution. कुछ ऐसा कुछ नहीं होता है हमारे, हम करते भी नहीं है, बिकॉज वी आर नॉट enthusiastic people. We don't want to bring them in stream. और इस बहाने कम से कम साल में एक दिन तो उन्हें दे ही सकते हैं, just for the sake of to bring awareness in the society. At least we can do, being a teacher, being a principal of the college university, being an administrator, being a different position on the sitting on the different position, हम चाहे तो इसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं अपने हेड से कि ऐसा किया जाएगा हर साल। तो अगर आपके कॉलेज में डिसेबल बच्चे नहीं है तो भी आप कर सकते हैं, दैट विल बी मोर बेटर। और उसमें सिर्फ कॉलेज के बच्चे, स्कूल के बच्चे और टीचर्स ही ना हो, बल्कि सोसाइटी के कुछ संभ्रांत लोगों को भी बुलाया जाए और उनको भी अवेयर करा जाए। कुछ पॉलिटिशियंस को बुला के उनको भी इस सब चीजों से अवेयर करा सकते हैं कि हाउ वी ब्रिंग दिस 2.21% population in the mainstream of Indian society. If 2.21% population will become the human resource, then they will contribute a lot in our GDP, which is the need of our to become the economic-based economy, with the knowledge-based economy. Thank you very much. With these words, my dear participants, I would like to ask you if you have any query or if you have any suggestions in my deliberation. Thank you very much. Thank you, Dr. Aftab, for such a elaborated lecture. I'm quite sure my participants would have enjoyed your lecture. So, my friends, still we have few minutes and Dr. Aftab is available for us. So, if you want to ask any question or you want to clarify any doubt, definitely you can. He is available to us for another couple of minutes. Dr. Kavita, do you want to say anything? No, sir. Thank you. Okay. Any question from any my friend?
Sir, may I audible? Sure, sure, sure. Sir, I don't have any questions. But I really want to say that this is really a very good session, and a very good initiative has been taken by AMU. That is phenomenal. Thank you very much. Thank you all. Actually, In fact, we have this paper of inclusive education in the Department of Education. So Dr. Aftab is teaching this paper since last few years, and Dr. Aftab himself is a very efficient person, in fact. So I thought that he will be the most suitable person to sensitize you people towards the need of the inclusive education, which has been mentioned in NAP 2020. So that's why I deliberately chose Dr. Aftab to do the needful. Thank you, my friend. And thank then, you. yeah, any other question? No, thank you, sir. थैंक यू सर। Okay. थैंक यू सर। सर बहुत ही अच्छी वर्कशॉप अभी तक हो थैंक यू रही है सर, थैंक मतलब। यू सो मच जी सर, जी जी। इट वाज ए ये वेरी टॉपिक वंडरफुल सर सेशन सर। बहुत ही वेरी अच्छे हैं, इंटरेस्टिंग बहुत अच्छे से वर्कशॉप। मतलब Please समझ speak आ one रहे by हैं। one. Please speak one by one. Asma ma'am. ओके सर। सर थैंक यू। मैं बस ये कहना चाह रही थी कि जो भी टॉपिक्स आपने मतलब सेलेक्ट किए हैं बहुत ही इंफॉर्मेटिव हैं, बहुत ही अच्छे हैं, मतलब बहुत Okay. ही अच्छा सेशन जा रहा है। Okay. Thank you. Thank you. Sarkar sir. PK Sarkar sir. PK Sarkar sir, कुछ कहना चाहते थे आप? No. सर Yeah. रियली वेरी गुड। Okay. Okay Sarkar sir. Yeah. Yeah. प्रीति मैम कुछ कहना चाहती थी? सर वेरी नाइस सेशन, वेरी इंटरेस्टिंग सेशन है सर। ये सेशन बहुत अच्छा जा रहा है, इसके लिए वेरी वेरी थैंक्सफुल। Okay. 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 Okay प्रीति मैम. So I don't think there is any other question, Aftab. Please, sir. Thank you. Okay. May I say something? Yeah. Allow Yeah. me Sure. 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 Manjeet Kaur ma'am, please. शाजिया मैम को सुना है मैंने यहाँ पे, अभी वो बोल रही थी, उन्होंने बताया अपना एक्सपीरियंस। तो वो बोल रहे थे उनको ना ये प्रॉब्लम हो जाती है, उनके रिजल्ट्स नहीं आते हैं या बच्चे गलत लिख देते हैं जो भी उनको स्टूडेंट्स मिलते हैं उनकी हेल्प के लिए। सर मैं बोलना चाहती थी कि आई एम ऑल्सो एन इन्विजिलेटर व्हेन एग्जाम्स आर हेल्ड इन आवर कॉलेज। तो बीइंग इन्विजिलेटर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मेरी होती है कि मैंने उनके सारे पर्टिकुलर चेक करने हैं। तो इजंट देयर एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टीचर्स ऑल्सो? मतलब शाजिया मैम ने ये शेयर किया कि उनके रिजल्ट्स लेट होते हैं, ये रीजन है, बट हम सारी पर्टिकुलर्स स्पेसिफिकली जो हमारे ब्लाइंड स्टूडेंट्स होते हैं ना उनके हम चेक करते हैं कि सब पर्टिकुलर्स ठीक से जाएं, कहीं कोई गलत ना लिखा रह जाए। Of course, you are right, ma'am, but you cannot do all those things which students have to perform in the OMR sheet. आप अपना साइन कर सकती हैं, बहुत करेंगे, एक बार उसका रोल नंबर आप लिख देंगी, लेकिन पहली चीज तो ये है कि सारी चीजें आप नहीं करेंगी। दूसरी चीज ये कि सारे इन्विजिलेटर आप जैसे नहीं हो सकते हैं कि सारे इतने कोऑपरेटिव हो। सो दैट्स व्हाई शी वाज आस्किंग कि हमें जो भी राइटर मिल रहा है वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए। एक राइटर का जो प्रोविजन है वो ये है कि अगर कोई बीए का एग्जाम दे रहा है तो 12th का बच्चा होना चाहिए। लेकिन जो साजिद के साथ वाकया हुआ है उसने शायद डिटेल में नहीं बताया, मैं आपको बताऊं। The writer was appointed as a peon of the department. एक प्यून को अपॉइंट किया गया था कि वो उसका एग्जाम दे दे आनंद फानंद में। So that was the situation what she was faced at that time. तो इस तरह की अगर उनके साथ injustice होगी तो how they can come in the mainstream of the society? Even though they have the constitutional provisions to provide the क्या नाम वो writer well before time and given a extra time to them to write the answer sheet. So these are their own rights and these are their constitutional rights and that must be given to them. तो ऐसा एक्सेप्शनल हो सकता है कि कोई अच्छा उसको इन्वेस्टर मिल जाए, उसके रूम में कोई अच्छा इन्वेस्टर पड़ जाए तो वो उसको काफी हेल्प कर दे। और मैं सोचता हूँ कि इसमें कोई हेल्प करने की जरूरत नहीं है, उनकी राइट है। तो एडमिनिस्ट्रेशन और जो भी डिपार्टमेंट के हेड्स हैं उनको वेल बिफोर टाइम उसको मैनेज करने की जरूरत है। एंड दिस कैन बी ओनली पॉसिबल थ्रू द सेंसिटाइजेशन एंड अवेयरनेस ऑफ दिस अबाउट दिस पीपल। आई थिंक सो। Okay, sir. Okay. Actually, we check each and every particular of these students, specifically roll number, name, subject, code, everything. I think it's my responsibility at that time, so we checked it properly. Okay, thank you, sir. Thank you. लेकिन एंट्रेंस टेस्ट में सब अलाउ नहीं किया था सारे इन्विजिलेटर को। जी जी सर, जी जी, ओके ओके, आई गॉट इट, थैंक यू। एंट्रेंस टेस्ट होते हैं
उसमें बहुत सी चीजें बच्चे को या राइटर को खुद ही फिल करवाए जाते हैं उसी से। Okay. So, is there any other question? No question? Right, No, my sir. friend. Yeah. Preeti ma'am? No Preeti ma'am? question, sir. Okay. So I think it's time to say goodbye to you people. So Dr. Aftab, on behalf of UGC HRDC, on behalf of my participants, and on behalf of me, I'm highly grateful to you for delivering such an elaborated lecture. So thank you very much, my friend. And I'm highly grateful to participants also who showed interest and they were very interactive throughout the session. So thank you very much, my friend. Tomorrow we have a holiday. So we will meet on 26th, that is day after tomorrow. Thank you very much. Thank you, sir. Okay. Thank you. Thank you, sir.